Hello, guys. Welcome back to the Nifty City channel. So, today being a Sunday, as you know, every Sunday we analyze Nifty, Bank Nifty. So, today we're going to analyze Nifty and Bank Nifty. So, basically, चीज़ें काफ़ी न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है SGX Nifty, as you can see, 158 पॉइंट्स डाउन है, 0.91%, 17,195 के आसपास. अब ग्लोबली फैक्टर्स नेगेटिव है. यूएस इन्फ्लेशन डेटा 40 ईयर हाई पे है. रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑन द ब्रिंक. पता नहीं वॉर होगा कि नहीं होगा. यूएस ने अपनी एम्बेसी को खाली करवाया है यूक्रेन में. अपने सिटीजन्स को बोल दिया है कि यू कैन लीव, you should leave Ukraine. War can break out at any point of time. Okay, but still they're trying. Diplomatic talks are going on. Let's hope that a war doesn't break out, because that will lead to a disastrous crash in the markets. Plus domestic factors में banking fraud 23,000 crores का निकला है, right? So there are a lot of negative factors going on. बैंक निफ्टी भी प्रेशर में आ सकता है, निफ्टी भी प्रेशर में आ सकता है. But as traders, what do we have to do? We have to follow price action. One and one thing only, price action. क्योंकि देखो यार क्या होता है मार्केट्स में, मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना रहा है कि हम जब भी न्यूज़ में ट्रेड करते हैं, जब सबको कुछ नेगेटिव लग रहा है, मार्केट डजंट रिएक्ट टू एवरीवन. जो कॉमन परसेप्शन रहता है, मार्केट उसको रिएक्ट नहीं करता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें. ठीक है, मैं लेवल्स बताऊंगा आपको. पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, फिर फ्यूचर्स चार्ट पे चलेंगे. डिटेल्ड एनालिसिस लेवल्स मैं बताऊंगा आपको, सो यू कैन मार्क दोज लेवल्स ऑन योर चार्ट्स. एंड फाइनली ऑप्शन डेटा को भी एनालाइज करेंगे, राइट? सो ऑल इन ऑल वील डू एवरीथिंग. नाउ दिस इज निफ्टी स्पॉट daily chart, daily time frame. So as you know, we have a nice little trend line going as a support. तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी अगर कल हमारा एक मैसिव फॉल होता है, गैप डाउन तो हम खुल रहे हैं, ये बात तो तय है कि हम कल गैप डाउन खुलने वाले हैं. सो गैप डाउन खुलने के बाद हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? फर्स्ट 5 मिनट पे वीवैप करके इंडिकेटर हमको लगाना है. फर्स्ट 5 मिनट में अगर जो कैंडल बन रही है वीवैप के नीचे सस्टेन हो रही है फर्स्ट 5-10 मिनट्स, सो यू नो कि पैनिक सेल ऑफ आने वाला है. So where do we find support? We will find support somewhere around 17,100. This will be our first line of support. Obviously 17,100 से भी नीचे डिप कल के कल एक्सपेक्ट करना, 17,000 तो आई डोंट थिंक ब्रेक होना चाहिए. एनीवेज एग्जैक्ट लेवल्स हम देखेंगे. सो दिस इज द ओवरव्यू फॉर निफ्टी. Like we had discussed previously, 17,536 was the resistance. We crossed that resistance, but we couldn't sustain above it, and we immediately fell down. Bank Nifty was little bit better compared to Nifty, but अभी considering the banking fraud, देखो मार्केट को क्या है, मार्केट नीड्स अ रीजन. मार्केट को कोई रीजन मिल गया करेक्ट होने के लिए, तो मार्केट करेक्ट करेगी. सिंपल एज दैट. तो अभी ये रीजन ग्लोबल फैक्टर्स भी है, प्लस लोकल फैक्टर भी आ गया एक. अभी तक क्या था कि ग्लोबल फैक्टर्स वो वीक, बट लोकली वी वर अर्निंग, कंपनी की अर्निंग्स अच्छी थी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, तो हम कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे थे. बट अभी एफआईआई सेलिंग तो हमको देखने मिल ही रहा है. नाउ मे बी डीआईआईज आल्सो गो एंड हेज देयर पोजीशंस, कि वो अपना फोलियोस कब तक ब्लीड करेंगे, राइट? सो वंस डीआईआईज आल्सो स्टार्ट हेजिंग, इट विल बिकम डिफिकल्ट. सो बैंक निफ्टी में द ट्रेंड लाइन इज लिटिल क्लोजर, राइट? सो सपोर्ट जल्दी मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को. ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुआ तो we are going to see a massive fall in bank nifty, right? So if the trend line breaks, our focus should be on, when we are shorting the market, our focus should be on bank nifty rather than nifty. This is my view. Now coming down to the exact levels, so you can mark these exact levels that we have given. Now this is the future chart. ये spot chart नहीं है. So future chart, if you want, you can just type nifty in your search bar and then go for nifty continuous contract in front, current continuous contract in front, right? So the
Flip zone for Nifty for tomorrow will be 17,380 to 17,412. Okay, this is going to be our flip zone. The first support that we will have is 269, 17,269 to 17,298. Right, this is the first support zone that we'll have. Even in the last trading session, we took support from exactly this zone itself. So this is going to be our first crucial support. But anyways, below this support only we are going to open. Okay, gap down khul rahe hum log. So below this support, 17,194 is the next support line. Right? It's not an area, it's a line. Somewhere around this zone we are going to open. Now definitely I feel we are going to touch the zone of 17,114 to 17,135. अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हम ये सपोर्ट जोन में, ये क्रूशियल सपोर्ट जोन जो 17,114 या 115 आप पकड़ लीजिए टू 17,135, ये 20 पॉइंट का जोन है, ये 20 पॉइंट जोन को क्या हम होल्ड कर पाएंगे? Okay, this is going to be the $1 million question. The next support zone that we have, which is going to be the final support zone for tomorrow, is 17,010 to 17,035. ये सपोर्ट जोन नहीं टूटना चाहिए. एकदम अग्रेसिव सेलिंग आई तो ये सपोर्ट जोन टूट भी सकता है, यू नेवर नो. राइट, उसके नीचे देन वी हैव 16,915. गलती से कुछ मिरेकल हो गया, अपसाइड्स देखने मिल गए, तो वी हैव 17,545 as our overhead resistance, and after that we have the resistance zone, crucial resistance zone of 17,637 to 17,650. Right, now moving on to bank Nifty. एक second. Okay, yeah, so this is the bank Nifty future chart. Let's go to 5-minute. Yeah, so bank Nifty में क्या है? We have a support zone of 38, flip zone of 38,681 to 38,735. Right, this is the flip zone. The support is days low, first support, which will be broken. Now moving further down, our major support zone will be 38,112 to 38,169. Okay, this is going to be our major support zone. After this, we have two areas. ये basically Fibonacci extensions है, 37,744 and 37,559. I don't see the market below 37,559 tomorrow. In case we crack, then obviously the psychological level of 37,000 is going to come into play. Now, if we see upside, we have a major resistance zone of 39,200 to 39,254, and we have a major resistance at 39,540. For tomorrow, upsides are, ये upsides आपको शायद देखने ना मिले, मार्क करके रख सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि we can open gap down, fall a little more, and then take a little support from the support zones. This is the view. Now, stock specific, there is one stock that I'd like to discuss, that is HDFC Bank. अब HDFC Bank में हमने देखा हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, ट्रेंड लाइन था as a resistance. Now you've seen multiple times we have taken resistance here. So 18th October 2021 we took resistance here, 12th Jan we took resistance here, 3rd Feb we took resistance here, even most recently 10th Feb we took resistance here. Now again HDFC Bank is at this resistance zone. So tomorrow if the markets are bearish, we may see a very good fall in HDFC Bank, right? If the markets are bearish tomorrow. So this is one stock that we're going to keep on our radar. I am not going too much stock specific because there are a lot of stocks that we can discuss, but you know, most of our followers feel that फिर video बहुत लंबा हो जाता है. So I'm going to keep it specific to this, and obviously all the best for tomorrow. Trade smartly. ट्रेंड के साथ राइड करना है हमको. अगर ट्रेंड डाउनवर्ड्स हमको दिखा रही है फर्स्ट 5 मिनट में EMA के हिसाब से, VWAP के हिसाब से, सो सिंपल चीज है ट्रेंड राइड करने को. आई हैव टोल्ड यू गाइस टाइम एंड अगेन, 9 EMA एंड 21 EMA. ठीक है, परफेक्टली. अगर आपको 21 EMA राइड करना है, 15 मिनट के चार्ट पे 21 EMA आप लगा लीजिए और वो ट्रेंड को राइड करते जाइए डाउन साइड पे. Moment 21 EMA is broken means the downside rally is not powerful. Very simple, easy fact I'm telling you guys. Baki, I will be connected with you guys on Telegram as usual. And
let's see if there's a big fall tomorrow. So we'll look to make some big money. All the best, guys. Take care. Hope you guys had a nice weekend. And please do like, share, and subscribe. It helps us a lot. Please subscribe to the video. Click on the bell icon. We're going to be coming up with a lot of videos on YouTube. Also, as you guys know, our classes have gone live. So in case you want to learn about the stock market, how to trade, what are charts, everything A to Z about the stock market, so you can join our classes. They're pre-recorded classes put up on YouTube, private links. So you can join and change your life for the better, right? So thank you so much, guys. Take care.